ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸಾರಿ ರಾಹುಲ. ಓಕೆ ರಾಹುಲ್. ನಕ್ಷತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'll just talk to you, see like this and now. ऐसे ही करना पड़ेगा. हाँ, कैसा आ रहा है? तैयार है? तीनों दिख रहे हैं? कुर्सी आ रही है ना? स्क्रीन बन गई. थाईलैंड थिंकिंग ऑफ. थाईलैंड क्या सोच रहे हो? सही है. सबसे पहले थाईलैंड की सोचते हैं. It's free. हाँ. Cheap it is. That's it. It's cheaper than India, but it has very good locations. मसाज तो अपने बारे में सोचेंगे ना. No, I'm not talking this in massage actually. मसाज के बारे में थाईलैंड का नाम आया और मसाज के बारे में सोचा आपने. ऐसा हो ही नहीं सकता. इतना तो सीधे नहीं हो आप. No, seriously I'm telling you. I'm not even if you watch and all. हम ट्राई करते हैं कि बहुत नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो, इतना मतलब फॉर्मल कॉन्वर्सेशन ना हो, ताकि हम जो छोटे जो बेसिक लोग हैं जो मतलब कि बस स्टार्ट ही करने कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो बेसिक आइडिया वही है कि मतलब कि आपको देखने के बाद किसी का मन करे कंपनी स्टार्ट करने का, और क्वेश्चन का फ्लो भी वैसे ही रहेगा कि मतलब आपके उन गलतियों से तो ट्राई करना, गलतियां बताना. बहुत सारे लोग होते हैं गलतियां नहीं बताते हैं, ठीक है. तो आपने जो गलतियां की हैं, जो है आपने उसको ओवरकम किया है, सॉल्यूशंस, राइट, देन विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट. तो ये जो सीरीज का नाम है वो है द स्टार्टअप गेम्स सीरीज. नाम से पता चल रहा होगा आपको कि यार स्टार्टअप के बारे में है, ठीक है. बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी एंड उषा जी, जब मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च कर रहा था तो थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि आपके बारे में. आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, करेक्ट. उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे करके मतलब कंपनी बिल्ड की. बैंगलोर से हो बेसिकली आप. Yes. और आप एचआर मैनेजर थे. एचआर मैनेजर का डायरेक्टली को फाउंडर, राइट. मतलब आप जब अपने आपको टाइटल देते हो ना, मतलब कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय से, ठीक है, हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय से, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय से आप एक फाउंडर सीईओ बन चुके हो, राइट, कंपनी के मालिक बन चुके हो इन अ वे, राइट. कैसे ये कैसा लगता है? So I think it's not like such a big company where the huge changes there. I think initially we were teachers. So ठीक है. So simplified minds Karnataka started mainly to teach Kannada people in Karnataka. ठीक है. So we don't feel that huge jump is there, no? From co-founder, I mean from normal teacher to co-founder of nothing as such. that. ठीक है. But of course, there's a formal registration, all these things, GST, all these formal things are started last years. But we were working from the beginning itself. See, ये बात है कि हम टीचर्स थे, अब भी टीचर्स हैं, बट जो लोग देखते हैं उनको हम शायद फाउंडर्स लगते होंगे, बट हमें अभी भी टीचर्स लगता है. Students, we are teachers. We are also teachers. ठीक है. Formally, company we should form some legal things we have to form and then start. But क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल अगर हम देखें ना, टीचर्स का जॉब क्या पढ़ाना है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है. टाइटल के बेसिस पर सारी चीजें काम होती हैं. हर चीज टाइटल के बेसिस पे होता है. हर कंपनी में आप टाइटल दे दो, उसके बेसिस पे काम होगा पूरा का पूरा, राइट. तो सेम टीचर्स का टाइटल चेंज होकर के को-फाउंडर बना. ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐड हुई होंगी, बहुत सारे काम आपके ऐड होंगे, राइट. विल गो टू दैट वाला पार्ट, ठीक है. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा बहुत आप दोनों अपने बारे में अलग से अपने खुद से बता दो कि आप क्या हो, क्यों हो, क्या करते हो, कैसे करते हो और क्यों करते हो, मतलब क्यों ही करना है इतना सारी मेहनत, राइट. तो ठीक है. Ladies first, start my Okay, so मेरा नाम तो बता ही दिया है. So myself उषा. तो मैंने MSc माइक्रोबायोलॉजी में कंप्लीट किया है. तो उसके बाद I was just working, but ये co-founder बनना from I was working in a normal company, ऐसा like it's not like some बड़ा company, ऐसा कुछ नहीं है ये चीज करके. तो उसके बाद मैं इनसे मिली और ये ऑलरेडी थे like he already had an institute. ठीक है. तो वो ऑलरेडी टीच कर रहे थे, बट कंपनी ऐसा नहीं था. इट्स नॉट लाइक रजिस्टर्ड और प्राइवेट लिमिटेड. मिलने के बाद हमने ये सोचा कि ओके करते हैं. उसके बाद ये फाउंडर बने, मैं को फाउंडर बनी, ऐसा. बट इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो एक सीधा साधा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. और या विद ऑल माय सिबलिंग्स. बेसिकली बैंगलोर से ही हो आप ना? born and brought up in Bangalore. Yeah, चिकपेट, कबनपेट, heart of Bangalore. चिकपेट है मतलब Chickpete. I mean, once upon a time it was small. I mean, Bangalore. ये चिकपेट, कबनपेट जो है वहाँ पे आप. Bangalore started from there. अच्छा, okay. Yeah.
It was a small small town. Chickpete. Chickpete. So I'm from heart of the Bangalore. ठीक है. So proper Bangalore. अरे मतलब एक नाम है, चिकपेटे मतलब नाम है, वहाँ से आप हो. Yes. ठीक है. और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. Okay, first, so my name is Rajendra Prasad. जी. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. My audience, you know Kannada little? नहीं. Okay, fine, no problem. Okay. कुंभा मतलब थोड़ा. ತುಂಬಾ. ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. Fine. So actually, so after I came from, I want to become a teacher. So in 8th class, my teacher asked me, what do you want to become? I told I want to become a teacher. I mean, I was so determined in 8th only. If I want to become teacher only, I'll become. Whether I go to IIT, wherever I go, doesn't matter. But I'll become a teacher after that. So I was teaching my own school to my own classmates. And then afterwards, even during engineering also, I was doing going to college and evening coming back and teaching students till 8 o'clock, 9 o'clock during my engineering also. All the 4 years. And afterwards, I went to IIT. In IIT also, I was teaching continuously. In IIT, after I do finish my classes, even I used to teach these lab attendants. Students will be there. They want to get to IIT. I used to take a lot of classes for them. Again, I came after that. I want to become a teacher. I got a very good opportunity, even in MNC also. I'm a hydraulic engineer. Hydraulic engineer. Yeah, fluid mechanics. Aerospace engineer. Oh, you understand very good. Okay. So since we are that specialization is good MNC, a lot of things for them. But again, when I came back, again I had a good opportunity for teaching in that was North Indian colleges, but I don't know Hindi much. Okay. So when I came to Bangalore, सिखा देंगे आपको हिंदी. ठीक है. So I came to again Bangalore is the best. Okay. But initially I used to teach. I mean, I thought of going to engineering college. Somewhere I didn't like a few things. Okay. Then I started teaching. I used to do home tuitions, teaching everywhere. Then started a small center in Halsur with 20 students in 2017. I think she was not there at time till now. ठीक है. Right? And slowly it started. And afterwards, 2017, I was. अपन थोड़ा ना मैं उस पे ज़्यादा धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के. Okay. ठीक है, कोई नहीं. मैं थोड़ा जैसे कि IIT की बात है, राइट? हम सब IIT की बात सुनते हैं, राइट? तो एक बहुत बार लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि IIT में बहुत सारे सुसाइड्स भी होते हैं, ऐसा है ना? राइट? आप जब IIT में थे, ऐसा कभी फेस किया? देखा आपने प्रेशर एंड ऑल? No, we actually what happened. My friend is there, so we used to watch movies. Actually, what happens before going to IIT, we never watched movies. You should be so determined. After going to, I did masters in IIT. So when I went to my friend's room, the next room only was suicide case. That guy was suicide and he was locked, and we used to watch the ghost movies in his room. So think, what if this guy is going to come? In IIT, in Kharagpur, actually, you have 2 rooms. We have one common entrance. So I think the other guy was suicided, and the room was locked. And we were sitting in another room, and there's a passage inside to come back from that room. So a lot of suicides. I think Kharagpur is very common. What do you think? मतलब ये question इसका follow up question है, right? What do you think, both of you guys, right? क्या रीजन है सुसाइड्स का? मतलब ऑब्वियसली वाला बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लोग टीचर्स पढ़ा रहे हैं. It's not only IIT, even in other places also, even after every time results comes. IIT का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब IIT huge pressure. Actually, even other places also, IITs they only have pressure. Parents will have a lot of expectations, very high expectations. Also, same thing when you also they have a lot of expectations from the children. And so when results come, when they're not performing, first step they take suicide. Probably suicide के लिए खुद से एक expectation होती है और parents से एक expectation होती है. खुद में एक एम होते हैं, ये करना है, वो करना है. शायद हर किसी को स्टडीज में इतना पसंद नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है, फैमिली प्रेशर ऐसा. बट खुद के अंदर जो प्रेशर हमने बिल्ड किया है, ये करना था, नहीं कर पाए, उसके वजह से शायद. As a teacher, मतलब as a teacher, right? Obviously आप दोनों teachers हैं, right? As a teacher, what are the solutions for this particular case? मतलब obviously suicides हो गया, mental pressure हो गया, right? कोई आपके अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन एडवाइस देना चाहोगे कि मतलब जो बच्चे कर सकते हैं? You see, suicide, one big solution is that you have to talk to the students. As a teacher, see what happens, students, they got disconnected. And the teachers are forcing them, parents are forcing them. They're disconnected from everyone. There is no person where they're 100% coming and sharing, sir, today I have this issue, today I have this issue. Actually, CET exam, whenever the CET exam happens, just 3 days before we get called, students keep crying. They are not होते हुए कॉल करते हैं कि we are quite friendly actually. So they just call 2 days before, sir. Okay. I have studied everything, but I have forgotten everything. I am so scared. I will not perform tomorrow. I will not perform tomorrow. Then we'll talk to them 30 minutes, 40 minutes. So many people call crying. एक लड़की थी जो बार बार मुझे कॉल करी थी, तो आई स्पोक टू हर. एक बार मैंने बात किया कि बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, काम डाउन. ठीक है. 2 दिन के बाद दोबारा कॉल किया, मैम मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है. तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स, मुझे एज ए टीचर फील लगता है कि
पेरेंट्स को खुद उनके पास, क्योंकि वो प्रेशर में होते हैं एग्जाम्स, जो कंपटीशन है आजकल, ठीक है, तो ओपनली बात करेंगे पहली बात, और इन्हें भी पहले से ही थोड़ा प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कैसे करना है, क्या करना है। लास्ट मोमेंट में सब लास्ट मोमेंट में रख लेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ही। तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरी ओपनली उनके पेरेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम है से डिस्कस करेंगे, तो दे विल स्टैंड एज अ फर्स्ट सपोर्टर। वो सपोर्ट करेंगे तो और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, पेरेंट्स इज एवरीथिंग। करेक्ट। Somewhere they need that someone to say, don't worry, if you're not सब getting कुछ 100, अच्छा होगा। 50, if you're not getting, some people cry even if they're not getting 95, not score 95. Correct, 90, 95, 99. It's okay, 80 also is fine. We'll tell the stories. Okay. एक्चुअली हमने ऐसे भी पेरेंट्स देखा है जहाँ पे वो खुद स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को प्रेशर नहीं लगाना चाहते। वो बोलते हैं कि मैंने खुद पढ़ गया, वो बोलते हैं कि नहीं इतना पढ़ेंगे बस काफी है, इसके बाद ये नॉर्मल जॉब करेंगे, ये बस काफी है, हमें नहीं चाहिए कि वो जेई जाए या आईआईटी जाए, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स सोचने लगते हैं। कुछ पेरेंट्स जब ऐसे बात करते हैं तो वी अप्रिशिएट देम। एट द सेम टाइम वी आल्सो सी सम पेरेंट्स वेयर लाइक नो इतना नहीं चाहिए, ऑलरेडी हार्ड वर्क लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स के फेस में दिखता रहता है, फिर भी पेरेंट्स आर नॉट सैटिस्फाइड। There is a way. See, if he's getting good engineering course, fine. Someone is forcing to getting good IIT only. Lot of things, 8, 9 foundation, lot of things happen. Solution is make them feel okay. You can ऐसे कोई, अगर मान लो ऐसी कोई कम्युनिटी होती जो मतलब स्टूडेंट्स के इसी चीज को मतलब कि थोड़ा पुश करते हैं, मतलब अगर स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, आपने कभी सुना है स्टूडेंट की कोई कम्युनिटी है जो मतलब कि पूरे इंडिया से स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है? शायद होगा, बट हमने नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब व्हाट डू यू थिंक? It's good, you should have. No, they have already communities in smaller level. Obviously school, this one and all. But larger extent, हाँ वो एक्चुअली दैट्स वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ पे सेम माइंडसेट वाले हो, सपोर्ट करें कि बोले अच्छा नहीं ऐसा हो गया, थोड़ा हार्ड वर्क लगा दो। इट्स नॉट लाइक आके उनको it's not like they want to come and push you or something. एक बात बोल देंगे तो हो जाएगा, अरे यार वो बोल रहे हैं, that तसल्ली जो चाहिए वो अगर मिल जाएगा तो शायद। बैंगलोर के ऊपर आते हैं, ठीक है, बैंगलोर की हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। Bengaluru, it's changed now. बेंगलुरु। जब तक इंटरव्यू खत्म होगा कन्नड़ा सिखा देंगे, कन्नड़ा आ जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। बैंगलोर का देखिए, आप अगर हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, कंपनी की चलो ठीक है, इंस्टीट्यूट की बात करें, आपका खुद का इंस्टीट्यूट सिंप्लीफाइड माइंड्स, राइट, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड माइंड्स में जो आप रीजनल स्टूडेंट्स को, राइट, ज्यादा फोकस करते हैं, कर्नाटका स्टूडेंट्स को, राइट, अगर मान लो बाहर के स्टूडेंट आते हैं तो उनको नहीं पढ़ाओगे आप? ऐसा नहीं है, एजुकेशन इज राइट टू एवरीवन। तो एक बेसिक क्वेश्चन इन इंडिया, एक्चुअली अभी बहुत चैनल्स हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत एजुकेशन में, बट रीजनल लैंग्वेजेस में कम है। ऑफ कोर्स वी आर कमिंग, बट हम इधर वी आर बोर्न हियर, we know our language very well, we know our people very well, the connection is there, and we should teach them actually. So, and many times parents, students comes and tell us that we have taken some, we have joined somewhere and they are not able to connect that well. Here connection is there. अच्छा, ये क्वेश्चन था, व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रीजनल लैंग्वेजेस? जैसे बहुत अभी कन्वर्सेशन चलना स्टार्ट हो गई है कि हिंदी वाले बहुत सारे बच्चे जो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है, राइट, पूरा अगर बाहर इंडिया की बात करेंगे, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, राइट, तो अगर आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो दे विल गेट मोर मार्क्स, मोर आइडियाज, मोर थिंग्स, दे लर्न सब्जेक्ट वेरी वेल। सेम थिंग इन हिंदी, वेरी सिंपल, उनको बहुत अच्छा तरीके में समझ आता है, दे गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल, rather than हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी क्लासेस लिए हुए हैं, ऐसे जैसे इन्होंने बताया, उस लैंग्वेजेस में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब वही हम यहाँ पे सिखा रहे हैं रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा में, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग मोर, और उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। मदर टंग वो कनेक्टिविटी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छे से समझ आती है, तो इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है पढ़ाई में, ऐसा। तो डिफरेंसेस आपको दिखने को मिल जाता है, मतलब इंग्लिश में अगर उनको पढ़ाएंगे, इफ यू आर टीचिंग देम इन इंग्लिश और कंपैरेटिवली इन कन्नड़ा, राइट, तो ज्यादा आप कह रहे हो डेफिनेटली कन्नड़ा, डेफिनेटली। So we have most of the students getting good ranks from this village background where everything is there, and they love it. I mean, they understand very well. So why we have to force them into? See, I think English is just, even I don't know English that much. You know, when I was from Kannada medium at the beginning, I said English Kannada medium. You need to know little English. For science, you don't. For engineering and science, you see ISRO chairman, K7. I think he was last chairman of the ISRO, and his English communication was. I think there was a time where people were mocking, but such a great scientist he was. I mean, even you see a lot of big people is DRDO, big scientists and all. No,
रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा फोकस है. I mean language actually matters when you try to understand few things, right? Presentation all English if you're something at all, understanding everything and all, you can learn in beginning stages. You don't have to learn engineering and all those things, but beginning stages of understanding concepts, no? And if you learn little regional, little in English, then you understand very good in their language, whatever it may be, Malayalam, Kannada, Telugu, whatever, in regional languages. And Marathi, in Marathi, you make 5,000 crores, 6,000 crores. I mean, if it's someone who's aspiring to make 10,000 crores, like that and all, of course, regional is a barrier. I mean, but if you want to create content, you want to teach in Kannada or any other language, regional languages, so happy with the state. Of course, Karnataka itself is a huge, big kind of state. Correct. Okay, you can do it. Regional content is growing a lot. Again, it's a personal choice. Personal choice. सबका अपना अपना choice है. Okay. अच्छा, एक बहुत मैं क्वेश्चन वही पूछना चाहता था कि मतलब अगर थोड़ा और डीपर जाएंगे ना आपकी जर्नी को लेकर के, ठीक है, कि आप दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है. देखो ऐसा तो नहीं, जैसे मान लो मेरे दिमाग में सवाल आया कि मुझे कंपनी बनानी है, ठीक है, अब चुटकी बजा के तो कंपनी बना नहीं सकता हूँ मैं. आइडियाज अच्छे, मान लो मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं कहता हूँ कि मेरा आइडिया तो बहुत कमाल का है, राइट. मेन वजह थी एग्जीक्यूशन, राइट, कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हो आप. तो आप दोनों का जो रोल है, मतलब इस इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, फाउंडर को फाउंडर बनने के लिए, राइट, स्टार्टिंग से कितना कितना रहा है, ठीक है, अपने अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में आप बता सकते हो. स्टार्ट विद यू, ठीक है, यू स्टार्टेड एवरीथिंग, राइट, देन व्हेन यू जॉइन द कंपनी क्या क्या डिफरेंसेस है, यू कैन वो आप अपने अकॉर्डिंग मैं ऐड करूंगी. हाँ, so here what happens is teaching, because I was very passionate about teaching in the beginning. पहले से जब छोटे थे तब से उनको टीचर ही बनना है, ठीक है. So even after I came to graduate everything, I was happily teaching. So normally with 20 students, every time the teacher to fill completely in a small room. But after she came, so it became properly one kind of like a setup properly. You know, there is a way to run an institute or a company. Then it became like that. She registered. She told we need to get a permission. We have to register. We have to get this. We have to get GST number. We have to get that. So we did everything properly after she came. ये बोलते हैं ना एक ट्यूशन से इंस्टीट्यूट. हाँ. Institute, our YouTube channel. We have a simplified maths app. So all these things. कैसे बना मुझे समझ धीरे धीरे, मैं सिंपल भाषा में समझ रहा हूँ. ठीक है. अभी ये जो थे ना इनको, he was not like मैं मुझे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना है या बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए. ये मतलब मुझे टीचर बनना था, मैं बन गया. 15-20 बच्चों को सिखा दूं, अच्छे सीख रहे हैं बस. ये तो थोड़ा चिल्ड आउट पर्सन था जो शाम को आए, तीन घंटे बच्चों को पढ़ाए, जाके सो गए, ऐसा. बट मेरे आने के बाद इट्स लाइक he was already responsible, but then मैंने उनको थोड़ा बोल सकती हूँ कि पुश किया कि नहीं हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसा. So we together then thought नहीं रजिस्टर करते हैं, कंपनी बनाते हैं करके. उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड बनाया. तो उसके बाद ऐसा एक करके actually what happened, we made a small institute, then we made one more big offline institute. बड़ा institute. We did all the marketing, everything. And we used to go to every college and give leaflets. हर एक कॉलेज के पास जाके ऐसे all the colleges leaflets देते थे. Then they will please join. And 2020 we did very good marketing. बहुत अच्छा किया. मार्केटिंग मतलब कैसे बोल रहे हो, मतलब मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग और more offline marketing. ऑफलाइन मार्केटिंग. तब तक हमें खुद पता नहीं था कि कैसे करेंगे, और हमारे पास इतना फाइनेंस भी नहीं था कि ऑनलाइन मार्केटिंग करें या ऐसा कुछ. Now also marketing was zero actually, very much. अभी भी कम, but that's the mistake we are doing right now. So we'll come to that part. तो किया हमने बहुत सारा मार्केटिंग किया, लीफलेट्स दिया, कॉलेज जाके. And we're expecting good admission. That's that, because we are the one. Even now people ask sometimes, there was some leaflet somewhere there. 1 month we gave free coaching. Free demo class. अच्छा, okay. No institute in India we gave. So you come to our institute, 1 month we give free coaching. Then if you understand, you take it or not. We are so confident that they will join for sure. No one is giving 1 month. People will not give you 1 month, 1 day demo also. They'll say pay 50%, then you take the class. Correct. People want refund even just after 2 days. But demo सारे लोग नहीं देते. No, it's not like everybody give demo. Demo maximum 2 days, maximum 2 1 month versus 1 month. Complete 2-3 chapters only. 1 month का तो ज़्यादा ही. Like that we promoted. We were expecting very admission. COVID came. Exactly, COVID आया उस time पे. March finished the exams. April they supposed admission happened. April only COVID came. And we got all the admin, we got names, everything and all. So it's gone completely. That time I was fully, we were thinking what to do, everything and all. And so she came into, she was telling वहाँ पे मतलब वो था कि मतलब खत्म हो गया सब कुछ. You start some YouTube. हाँ, ऐसा हो गया था कि अरे यार अगर कोविड हमें पता नहीं कि कितना दिन रहेगा. Okay, first of all, जैसे कि in the starting you guys
was just having 20 students, right? 20 वो भी students. offline. Online कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था. ठीक है. Online कुछ भी 0 नहीं था. था. फिर COVID है. Running for it, I was alone. मैं नहीं थी उस टाइम पे जब ये new office in JP Nagar. ठीक है. Then she joined me. Okay. So in the new office JP Nagar 2019 in November we started. So we supposed to take admission for the March, April, because November and middle you won't get it. We used to get some students to teach and all. But November, in the March, actual admission, actual students year takes place. I mean, academic year. So we did nice marketing in December, January, February and all. We expected good admission, COVID came. So that time we started office, we paid the rent, everything. And we started the COVID came and it shut down. So at that time, whatever the 20 students we are teaching in small room, that we invested everything in this office. So this office जो छोटा ऑफिस था, huge rent was there. जिससे हमें थोड़ा इनकम मिला, उसे उठा के बड़ा ऑफिस के लिए डाला, एक्सपैंड करने के लिए, और एडमिशन होने से पहले ही कोविड आया और सब बंद. So no clue of we never taught online and all. It's 2020 it was 2020 March. 2020. Then she told me. I was something online है, will teach online. इनका पहला डायलॉग था, अरे यार, it's useless, कौन करेगा? Who will watch? YouTube की बेइज्जती कर रहे थे. अच्छा. ठीक है. YouTube की बेइज्जती. That's right. अरे ये फिर. She told no, you should do. Then we didn't have option. I didn't have option. ऑप्शन भी हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उस टाइम पे सब ऑनलाइन कर रहे हैं. करेक्ट. हम ऑफलाइन एक एडमिशन के लिए कितना हार्ड वर्क करेंगे कि एक एडमिशन करवा दो, इस महीने का रेंट हो जाएगा, एक और एडमिशन करवा दो, नेक्स्ट अगला महीने का रेंट हो जाएगा. सो जो स्टार्टअप का स्क्रैच होती है ना, एक महीने का रेंट ऐसा. कोविड दिन हार्डली some owners reduced 50%. Many people didn't reduce 50%. ठीक है. Only 20% they give concession. That's it. And we had so much already set up. We invested so much to set up the. इतना सेटअप कर दिया, पूरा जो इन्वेस्टमेंट है लगा दिया. अब कहाँ से स्टूडेंट्स नहीं है, कैसे चलाएं? फिर then YouTube started 2020. ऐसा स्टार्ट किया. We started. We thought of. I mean, basically what happened. So I thought YouTube, okay, we will do it anywhere. What I was thinking is, 8 months, 9 months, COVID will go off. So I'll teach some. We'll keep teaching something on the YouTube. Then I told we will do free. I mean, something like that. She told why, I mean, where we get the income? Actually, क्या हुआ यानी कि start something. I mean, we started YouTube channel. अभी थोड़े सब्सक्राइबर्स आ रहे थे. अभी कोविड चल रहा है अभी इनकम नहीं है हमारे पास. YouTube में तो इतना इनकम नहीं आती एजुकेशन चैनल में. अभी व्लॉग चैनल थोड़ी है कि सब देखेंगे आएगा करके, तो डेली व्लॉग तो नहीं है. तो इसलिए हमने सोचा कि चलो एक कोर्स लॉन्च कर देते हैं. बट ये सोच रहे थे कि उसे फ्री में लॉन्च करेंगे. अब फ्री में लॉन्च करेंगे तो कैसे चलेगा? तो देन अगेन वी थॉट YouTube में किया था बहुत सारा. But we launched one more course because students only were calling and asking, sir, you have coaching. And parents asking, please can you take my children, some doubts are there. We want YouTube they're saying, but parents wanted. उनको कुछ चाहिए था. Okay, why don't we do it something like that? One course we will launch something for the students. So where we take personally, we will call them, we'll talk to them, and we can give whatever good facilities for them they want. So like that initially, I think in the 2,500 December I think we launched on my birthday only. On my birthday, we launched the course. Birthday कब आता है? December 16th. Okay, on the same day. Okay. Then we launched the course. And then so initially, then it picked up from that time. That is a beginning point where it picked up. But it's not that easy to launch online courses. And what was the price? 2,500. The course price. PUC courses launches we are doing 1,500. और कौन सी एप्लीकेशन में बनाया था ये कोर्स आपका? Simplified. No, we have did it in app. Our own simplified means app. Okay. Then we did it in that, and then that's what we took a third-party LMS service providers where they will provide everything. You have to pay everything. Now you can do it. App getting is not an issue at all. Now you can get so many. It's a third-party app, but working for us. ऐसा. Like that. हमारा खुद का ये ऐप है, फिर मैनेजमेंट किसी और का ऐसा. अच्छा किसी और ने मैनेज किया सारी चीजें. We have to pay charges for them for every time. इतना charges commission होता है हर एक एडमिशन के लिए. Lot of things and then there it picked up. Actually, slowly picked up. At one point of time, we reached after COVID, we started again one more office for offline sake, but offline काम नहीं किया. We wanted to give more concentration for the online students. Okay. Because everywhere, what happens, students are going to online. They're not getting that concentration, that touch they want. The teacher is teaching,
ask the teacher, talk to them. If a student calls to a teacher, they should be able to respond them sometimes. On online, as in देखें ये सबसे बड़ा doubt है, right? Students का, right? The physical touch is not there, right? वो वाला चीज ना. That is what we wanted to give, that physical touch with some few students. Few students having an offline center. No, one more reason why we don't want to go all India level also, because we don't want so many students also. We Karnataka, Kannada students. It's a good small. जितना भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है. मतलब अगर सिर्फ कर्नाटका की बात करें, यहाँ पे कम से कम almost 1 crore students. No, students 1 crore. No, I'll tell one more thing. I'll tell. I'll tell exact market. Second PUC students, we have around 3 to 4 lakhs. 3 to 4 lakh students are there. Only 3 to 4 lakh students. ठीक है. This is only our audience. ठीक है. और आपका अभी कितना कैप्चर किया आपने? मतलब 20 स्टूडेंट से लेकर के अभी कितना कैप्चर कर लिया? अभी YouTube सब्सक्राइबर से I mean 1.72 lakhs subscribers are there in YouTube. 1.72. But still in Kannada, no, Karnataka, still people are not aware of us. Many people. बहुत लोगों को अभी पता नहीं है हमारे बारे में. Slowly, बचल जाएगा, धीरे-धीरे बचल जाएगा. We have touched that target now. But it's not like 10,000, 20,000 like how people. Students कितने हो गए अभी तक? कोई आइडिया? मतलब एक नंबर students का? इतने साल से? We taught around. अभी not big numbers. What is the number of students we taught? Around 1,500, 2,000 students. 1,000? 500, 2,000 students. In offline, we don't taught around 200 students. Maybe offline 100 or 150. No, one more thing I'll tell you, we don't have, it's not like we have so many faculties, put so many faculties, just teach everyone. No, if someone finds students come, what other people will do, they'll put up one more faculty. You teach one more batch, you teach one more batch, you teach one more batch. But, you know, एक और बात है कि ये इंस्टीट्यूट्स बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्या होती है कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स को लगा दो, 100 स्टूडेंट्स लाइक दैट, and then just put some teacher किसी भी टीचर को डाल दो और पढ़ा दो, बस पोर्शंस कंप्लीट होनी चाहिए. That's what. So rapid expansion. There's something when they get 500, next year they want directly 5,000. Correct. ये तो वही तो होता है. So our aim is 500, next year 1,000, and next year 1,500, 2,000. We just go. But हम जो ऑफलाइन करते हैं, maximum 60 students in a class. उससे ज्यादा लेते नहीं ऐसा. We did 1 year offline. Again we want to give more focus more on quality rather than quantity. ठीक है. अभी से लेकर के अभी तक के जो स्टूडेंट आप कह रहे हो कि 1,000 2,000 के आसपास, 2,500 के आसपास स्टूडेंट्स रहे हैं. Student based. But every year on YouTube, last year I think we must have taught at least 1 lakh students. Almost 1 lakh students. And that's for free. That's for free. Yeah. यहाँ पे दोबारा मैं बोलती हूँ, अगेन इट्स 2 different things. One is on YouTube, जहाँ पे हम फ्री पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स हर साल हमें देखते हैं, पढ़ाई करते हैं हमारे साथ, और जो सेपरेटली अलग से कोर्स लेते हैं. तो आप कोर्स के बात करेंगे तो 2,000 रहेगी हमेशा. मतलब एक ऑब्वियस बात है कि ऑब्वियसली फ्री में कंपनी चल नहीं सकती है, आपको वो वाला पर्सपेक्टिव भी लेके आना पड़ेगा. We should learn. I mean, how much we should learn. Suppose if she was graduate, I was graduated, we would have earned really good in a company. My friends who are graduated IIT, I think 60, 70, 80 lakhs they're earning actually. Forget about this one. Huge they are earning it. Now, if don't want to earn that much, at least something like maybe 50% of that or something like that. एक एम्प्लॉय की जर्नी और को-फाउंडर की जर्नी, फाउंडर्स की जर्नी या फिर कंपनी जो चला रहे हैं उनकी जर्नी बहुत डिफरेंट होती है. मतलब एक अगर देखा जाए तो उस चीज में उसके ऊपर हम एक बार आते हैं. Mainly we should think about employees too. They have salaries for them. That much should run. They should have comfortable life. They should not sacrifice everything. They should come and work for us. No? It's not like that. When someone is working, you have to pay them very well, and you whatever something for that you have to earn. You are there. आजकल के बच्चे नहीं रहे. अच्छा ऐसा ही है. बहुत. अपने बचपन में क्या किया आप लोगों ने? आपने इस शराय नहीं कभी बंक किया हो कभी आपने? So as a student क्या पर्सपेक्टिव चलता है? मैं थोड़ा आइडिया जैसे मैं अपने अब अगर बात करूँ स्टूडेंट की, राइट, अगर मैं 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में हूँ, राइट, और कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अलग से पापा का प्रेशर है, मम्मी का प्रेशर है, पढ़ना जाना है, टीचर्स अलग से हमें 10 तरह का होमवर्क दे रहे हैं, राइट, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम ट्राई करते हैं कि यार भाई नहीं करना, हमें अपने अंदर चल रहा होता है, ठीक है. फिर अभी ये बंक कर रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी कोई कोचिंग में कोई पसंद आ गया तो उसके साथ घूमने के लिए जा रहे हो, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट. तो ऐसा कुछ आप दोनों के साथ भी कभी हुआ है, करने का ट्राई किया, या फिर हमेशा सीरियस स्टूडेंट ही रहे आप? जब हम स्टूडेंट अपने स्टूडेंट की बता दीजिए. एज अ स्टूडेंट क्या she was like more into all the activities. मैं तो पढ़ाई से ज्यादा बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज हो या कुछ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना हो, एंकरिंग हो, ऐसा बहुत सारा मैं करती थी. और मैं भी क्लास बंक करती थी. ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्टूडियस थी या
हमेशा बैठ के पढ़ाई करती थी मैं ऐसे आई एम द वन पर्सन हु वांटेड टू बैलेंस बोथ मुझे वो भी करना था एडिशनल एक्टिविटीज भी करना था उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना था ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई करती रहो एंजॉय मत करो ऐसा नहीं सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू बोथ बैलेंस बोथ मैं ऐसी थी आई एम फुली इनटू स्टडीज फुल्ली सीरियसली आई टेल यू एन एग्जांपल व्हेन we stay in residential school nowadays there's nowadays okay so I stay in Bangaluru nowadays Sunday we don't have classes okay so but I was the one person who used to come in Sunday and then Sunday we used to have sometimes studies and I sat in one of the classrooms that too I used to search a classroom where no one is there there should not be any person I'll open the book and study everything by myself actually okay so then after people the secretary is locked we have that entire the school main gate only he locked and went off and even no one knows where I am there. Evening assembly has happened, they were searching for me and I was studying till evening. Later I came and I saw the door was closed. Again I went back and studied actually. So I was a person like fully studied. I used to go inside this, I mean water pipes will be there. कभी-कभी मुझे लगता है कि जो इतना ज़्यादा पढ़ाई करता था और मैं भी पढ़ाई करती थी ऐसा नहीं कि 90 प्लस ही आना है ऐसा नहीं है तो कनेक्टिविटी कैसे हो गया? सही बात है पार्टनर मतलब कैसे चूज कर लिया एक दूसरे को? Because in science we say opposite always attracts. Real life में भी ऐसा होता है? Yeah, because I like traveling, she don't like traveling. So it is always we have find God will find someone. You want to do this extreme. Actually, that somewhere is good actually. If imagine I extremely study, say something where she want to do activities and all. Nowadays even in institute students also she will tell we'll do some activities for them, we'll do something and all. I'll say no studies like that. बहुत important भी होता है ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ाई कर लो कल के बाद आप जॉब पे जाओगे ऐसा नहीं कि हमेशा थियरी पढ़ती रहो इट ऑल्सो डिपेंड्स आप कैसे एक कंपनी में काम कर रहे हो तो कैसे हर लोगों के साथ आप मिलते हो कैसे एक टीम बनाते हो एवरीथिंग मैटर्स सो आई गेस पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज भी होना बहुत जरूरी है I think the opposite is always good because one person is extreme in one thing other extreme in another thing they will try to minimize other person effect now I like extremely traveling suppose if a female keep traveling every day she'll put a break okay like that it is always I think it's a good combination I feel अच्छा इस फॉलो का एक जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं राइट आजकल की कल्चर भी बहुत ज्यादा है राइट कि मतलब स्कूल मैं तो ड्रॉप करके भाई अब कंपनी खोलूंगा या फिर मेरे को स्कूल कंटिन्यू नहीं करना है कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना है राइट अकॉर्डिंग टू यू है मतलब क्या लगता है ये सही है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वैसा है ठीक है कि मतलब सिर्फ स्कूल में पढ़ाई कर करके कुछ ज़्यादा कुछ फायदा हो नहीं सकता मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बुक में पढ़ते पढ़ते जैसे आप बता रहे थे राइट मिक्स होना जरूरी है ठीक है सिर्फ बुक की चीज़ें पढ़ करके कोई फायदा नहीं होता मेरा ये पर्सपेक्टिव है व्हाट डू यू गाइस थिंक एक्सट्रीमली करेक्ट एक्चुअली सो स्टूडेंट्स मैं भी वो बात बहुत मानती हूँ बट अलग-अलग एग्जांपल्स है इट्स नॉट लाइक ड्रॉप आउट दे से एवरी टाइम बिल गेट्स ड्रॉप आउट समथिंग फ्रॉम वेयर दे आर ड्रॉप ऐसा नहीं हाउ मेनी आवर्स दे वर्कड no they have a dream actually so nowadays students what happen I drop out no it's not like drop out man if you drop out also you have to work a lot if you want to do coding you want to start a company startup no how much hard work you should do it's not easy you want to run a hotel any business you want to run you have to do so much hard work and same order if you do in 11th and you get 99 100 will get off I mean you have to do hard work any time in your life if you want to start a company it's not I drop out I will chill out like that if you drop out and start a company means and whatever the subject you are taking right that you have to give full 100% interest see we have a lot of students in fact I have some student where recently we met so many students actually one guy is just passed in PUC but he's extremely good at coding already he says sir I don't want to get into all these things I'm already learning coding everything I'm extremely he's told me I know this language I know that language I learned everything from YouTube itself but my maths marks are a little less it's fine but I'm loving this I find if I study 10 hours I'll study 8 to 9 hours only on this 1 or 2 hours just school to do whatever it may be so yeah there was one more singer also recently met I mean they're putting huge amount of hard work on the other aspect. Okay. If you're dropping out, you put your lot of amount on the other aspect, not like dropping out and chilling out. That is wrong. No? So, yeah. You can drop out, no problem. School education is I understand. But without school also you can become an engineer. There's no doubt. I'm telling you. But कुछ भी हो एक स्टूडेंट के लिए एक बेसिक डिग्री तो होना ही चाहिए. It's very important. आप कुछ भी कर लो कोई स्टार्टअप कर लो आगे जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अच्छा मान लो आप एज अ स्टार्टअप ठीक है आप दोनों सवाल है ठीक है एज अ स्टार्टअप मान लो धीरे धीरे ऑब्वियसली कंपनी और बड़ी होगी मतलब आपका इंस्टीट्यूट और बड़ा होगा राइट ठीक है आप डिफरेंट लोगों को जो ऑन बोर्ड भी करोगे राइट बहुत सारी चीजें देख करके तो ये जो क्वालिफिकेशन वाली बात है मेरे पास डिग्री है राइट कितना मैटर करेगा वो चीज इट्स ऑलमोस्ट इट इज आई कैन से इट्स जीरो मैटर्स I tell you zero आ गया एक बार no why I'll tell you reason no it's not
problem is what I'm saying is hard work and determination. Right. So we have interviewed a lot of people last year. A lot of people have interviewed for teaching job. Okay. And when we say they have something big degrees, MSc and all those things and all. Actually, there is two ways where like बहुत सारा पढ़ लिया जब वो execute करने का आता है तो they don't have anything. आपके पास डिग्री है but knowledge नहीं है. ठीक है. अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है फिर भी knowledge है तो वो तो चलता है. तो yeah, like that. So it's not like it doesn't matter at all. मेरे perspective से some of the biggest, I don't say name, biggest educators in India are just dropouts only. Okay. So I don't take name actually. Even people understand they are dropouts. They are dropouts, but they have made it to that level. उतना hard work. But determination was there. Determination. Constant determination है तो उन्होंने. They have studied 10 to 12 hours in a day just to teach something for students. The determination should be there, no? The expression. And when you take a topic, right, you have to visualize yourself. I have to put it in this way. It's not like I come, I give definition, I give formula, I give answer. You have to make them understand so that they can tell their own definition. And you teach in such a way, their own definition is done. I teach in such a way that you can tell your own answer in your own words. You can tell the concept to me. It's not like I give one to you, you mug up that and you tell me that. That is not teaching. So this is why it's very hard to find good teachers. It's very hard to find. आपको पढ़ाई करना है, आपको ड्रॉप आउट करना है, नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, है ना. अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है, एक जैसे मैंने बताया कि कोडिंग में हमारा स्टूडेंट वो बहुत अच्छा था. एक और स्टूडेंट था जो पढ़ाई में इतना नहीं था बट उसका खुद का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल था और ये ऑलरेडी हैड अ गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. ऐसा कुछ स्टूडेंट्स है जो इज वेरी गुड एट समथिंग, देन ओके इफ यू आर ड्रॉपिंग आउट दैट्स फाइन. बट इफ यू ऑलरेडी डोंट नो आपको क्या करना है, आपको कुछ एम नहीं है, आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो वेर यू एंड अप. कल जाके आपको जॉब भी नहीं मिलेगा. एक कंपनी में जाना है तो एक बेसिक डिग्री तो पूछते हैं. तो ऐसा डिफरेंस आई फील. Teaching now is become, I can say people can choose. I think 5 years back, when I say someone teacher, my parents only said teacher. Because see, there was a huge expectation. From IIT, I have done. Everyone is thinking IIT means you will do something big. You will do. Then what is this guy is doing? Teacher is doing. He is going house teaching, home teaching is doing. Tuition is opening. Like there was a huge. Teacher means there's always low. They see low in the society. Teacher. Nowadays, even now. अभी भी अगर हम बोले कि हम टीचर हैं तो. We won't say simplified means something on our YouTube channel. If anyone asks us, no, we are teachers. They say. Teachers. वो एक्सप्रेशन रहता है. Then if too much this expression, I'll tell no, we are teachers. We have our own institute. उसके बाद बोलते हैं. So you know this one. I mean, they have an app. Oh, like that they will think. But the moment we say teacher, no, they say little. But I think that's changing a lot in last 3-4 years, no, because this online revolution, all teachers. ये कोविड के बाद टीचर का एक good name there. रोल आ रहा है. एक रोल आ रहा है. Celebrities are now. Bouncers you need for teachers to protect. I don't understand. You can check online. Yeah. I mean, like not bouncers, but then yeah. Hey, there's some teachers will come and fight as bouncers. ये जिसके बहुत ज़्यादा मतलब popularity है. And there's a simple difference. In India, if you do in engineering, no, they'll ask you to do project. What you will do? Just copy something, change little bit values. और ये तो पूरा business भी है, पूरा copy करने का, practical बनाने का. Everything. And if you give some money, they will consider. थोड़ा पैसे देंगे तो. But why IITs are famous? I'll tell you. In IITs, your project should be extremely good. My master project only took 1 year, and you have to go to the real location. I did hydraulic dams and all. I have to go to real dams. I have to visit the data, real data. I have to simulate a model and get the real thing, and that should not be there anywhere else. They will throw you like. In fact, I'll tell you this story. After 6 months when I gave a review report, in the room 4 rooms, my professor throwed my report. It is not nowhere IT level. You are still thinking something you're in some normal college, and what is this report you're given? He throwed it to the door. This is one of the worst things I've seen in my life. Then become very serious that the data should be really good and everything should be practical. The project should be very practical. There should not be one word copied somewhere. That is why the project was the most important thing that should be there. Means what you studied in 1 year, 2 year, 3, whatever it may be your course, that you have to get a project in which it's extremely good. Even she has done a project with directly central government, DRDO. I mean, not DFR, Food Research Laboratory. That's where she learned. See, अब colleges में सब क्या हो रहा है, जैसे मैंने देखा है कि last semester में बोलते हैं कुछ project करके आओ, 6 months time देते हैं. But प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट या कॉलेज की तरफ से सपोर्ट नहीं होता है कि ये वो गाइड नहीं करते हैं कि यहाँ पे जाओ, यहाँ करो. ऐसा नहीं होता है. हमें खुद को ढूंढना पड़ता है
वो ढूंढने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है। उसके बाद वो टेंशन में ही पता नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई गेस इस पार्ट में थोड़ा प्रैक्टिकल एजुकेशन देना बहुत नेसेसरी है। What do you think? क्या very simple. I think college which is taking the engineering, especially I don't know about other things, engineering I'll talk about because correct engineering. Yeah. So engineering, what happens? So it's very important that it's a college responsibility to give a practical training or get an internship from the college side. When they're charging 15 lakhs, 20 lakhs, can't they get a small internship? It's not like they let the student, you go yourself. Before 10 years, there was nothing like internship. There was the internship campus, was not there. Now they're making it, but students, it's very difficult to find it. They can't go. It's a college responsibility to give us something practical oriented. What they're teaching, they say practical. Going to lab and doing is not practical. Okay. Project, what they're doing is college should support and college should fund them. Also, if the idea is extremely good, can't they give 5 lakhs, 10 lakhs? 5 lakhs for a project. They're not doing that much of it. I'm talking about private colleges. Okay. IITs though, they will fund you 1 crore also if you want. But private colleges, so to change that technical, I mean to bring it, no, practical projects should be encouraged and college should take responsibility to give internship and give the funding for it. But see, this is one way where college tells you that college के जो last 6 months ये project कर लो, but उसके अलावा भी as a student अगर हमें interest है तो हम खुद कर सकते हैं। कि जैसे मैंने मास्टर्स में ऑप्शन था कि हमें करना ही चाहिए, बट मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया था जब आई वाज डूइंग माय बीएससी, व्हेन आई वाज डूइंग माय डिग्री। तब तो वो कोई प्रेशर नहीं था, इट वाज चूजन बाय आवरसेल्फ। मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स हमारे टीचर के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बनाए थे हमने, सो व्हिच वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो दिस आल्सो कम्स इन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अगर आइडिया है, आप जाके आगे क्या जॉब करना चाहते हो। अगर देखो मैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो माय पार्ट वाज मोस्ट ऑफ इनटू रिसर्च एंड थिंग्स। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू पीएचडी और रिसर्च समथिंग, सो पहले से आपको खुद को आर्ट वर्क करोगे या खुद को प्रोजेक्ट बना सकते हो। इट्स नॉट यू कांट डू इट। करेक्ट। सो कॉलेज तो आई डोंट नो इफ दे विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम, वो तो चांसेस नहीं, इंडिया में बहुत कम है। तो बट ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। जैसे मैंने किया था, आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद भी आपको एक पता चल जाए कि आप सच में अच्छे हो, इसमें कर सकते हो या नहीं। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, पूरे इंडिया की बात करें ना, बिग सीट्स बहुत कम है। ओवरऑल देखा, but I frankly tell you that so many lakhs of students, but the people who are really interested, people who really want to do something, is very narrowed down. Really narrowed down. Nowadays, people say we don't have jobs. Actually, there are so many people who want to give jobs, but they not find right candidate only. For an example, हमारे इंस्टीट्यूट में ही एक रिसेप्शनिस्ट के लिए ले लो आप, ठीक है। We hired. He wanted to hire people. I hired also, but we pay good salary, very good salary. We are ready to pay you salary. कितना पे कर रहा हूँ रिसेप्शनिस्ट? Receptionist will pay somewhere 20. Or that's initial stage. Just beginner. 5 days. ठीक है। And this is an experimental basis. Receptionist हो तो experimental basis. I mean experimental basis. If they're working hard, we can go more than that. But no interest. But उनको नहीं है, they don't want to. They don't want to work hard. उनको ना, they come, they go, but they want. And they don't want to take any feedbacks. अगर हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसे करेक्ट कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे बात करो। Say for an example, receptionist should be very polite and she should have a good amount of information. Correct. वो सीखने के लिए रेडी नहीं हो, फिर जॉब November we start hiring process now because it's changing the office now. November we have entire process again hiring. The hiring का पूरा process start. See, we are ready to give job, but people are out there. Quality वाले आओ भाई। Very no, actually where in fact schools are paying little less. We'll say obviously pay more than what school is paying. Schools are paying. Whatever the present market salary is there, more than that. But you should have interest, no? They is chilled out, right? उन्हें लगनी चाहिए कि हमें ग्रो करना है, हमें सीखना है। It's very difficult to find a good person. ये क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो आपकी खुद की कंपनी है, ठीक है। जैसे कि मैं किसी भी कंपनी की बात करूंगा, किसी कंपनी में कल्चर होता है, टफ होता है, छुट्टी नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, छुट्टी करोगे तो मैं मेल कर देंगे वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, राइट। और बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है खुद से बहुत सारी चिल आउट होती है, और ऐसा लगता है कि मुझे कंपनी में खुद जाने का मन करे। दो पर्सपेक्टिव्स हैं, राइट। एक होता है कि भाई आप दोनों चीजें हैं, राइट, कि भाई जहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा, बस पैसे सैलरी मिल जाएगी तब जाएंगे। और दूसरी जगह पर जहाँ पे वो खुद जाने का मन कर रहा है, पैसे में कम भी मिल रहे होंगे, खुद जाने का मन कर रहा हूँ उस कंपनी में, राइट। तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस, ठीक है, बना रहे हो कंपनियां, राइट, तो कल्चर बनाना भी आपका काम है, कल्चर वैल्यूज क्रिएट करना, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या कल्चर एक सही आइडियल कंपनी में होना चाहिए जो आप भी क्रिएट करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि मतलब आप बस बोल रहे हो
तो व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या बनाने का ट्राई करो एज अ कंपनी, एम्प्लॉइज को क्या देना चाहते हो आप, एम्प्लॉइज को क्या समझ लो बहुत सारी चीजें, तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस बताओ. So especially in teaching field, I think it's not like too much this someone is boss or someone is like low and all these things. That should not be there because we are all somehow teachers and all these things. And I think somewhere majorly actually no. So there's there should not be this hierarchy where there's one person big person, there's one low person. Of course there should be some this one, but not too much also. That barrier should be broken. Where you can freely communicate and tell your ideas, do this, do like. Especially for growing startups or like where we have 20 people, 10 people members, no, it's very important. This is very important culture, and it's not like that. And it's very strict that you can't take this, you can't do this, you can't do that. So that should not be there. And one more thing, I think companies also should. One more thing, I think every company should provide, whether it's startup, everything and all, they should provide some benefits for them, like health, gifts, all these things. Insurance, all there from their point of view. And it should be friendly, more like. According to you, क्या इंतजार कर सकते हैं? See, according to me, सबसे पहले हाँ, as you told ये मैं बॉस हूँ, आप एम्प्लॉय हो. आजकल ऐसा चलता भी नहीं है. चलता भी नहीं है. वो अच्छा भी है. आप सब यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, उनके साथ आप ही सिंगल गोल. करेक्ट. एंड उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए. अगर आप कभी लीव लेना चाहते हो तो आप प्रायर में इन्फॉर्म कर रहे हो, ओके फाइन करके आप ले सकते हो. सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी गिवन. बट प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है कि व्हेन वी आर बीइंग टू गुड उसका एडवांटेज भी लिया जाता है. ओके तो ऐसा नहीं होनी चाहिए. सो द कल्चर शुड बी वेयर लाइक इफ वी आर गुड एट द सेम टाइम उनको मेंटेन करना पड़ता है कि ठीक है अगर डेलिब्रेट हैं तो उसके हिसाब से हम भी जेन्युइन टू द कंपनी ऐसा. सो गिविंग एन इंश्योरेंस टू देम ऐसा we can provide such opportunities or I can say benefits. This is teaching field, no, they should have a goal that these are my children, I only teach them very good. Whether you have 1,000 problems, no issue. When you come here, teach them and then take off this one. Just whatever the work is, finish and go, that's it. But don't, we'll get angry when there's something is there, the question is not completed, that is not done, this is not done, simply taking for granted, and that should not happen. Something where in all EdTech nowadays what's happening is just complete the portion nicely for them. Let children understand everything and afterwards. And I guess in one office, mainly culture, I guess it's a teamwork. I guess we are feeling that lot. हर एक को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वो काम कर रहा है, मुझे कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा. सो अभी हमें कुछ टारगेट है. इमेजिन उनके घर में कुछ फंक्शन है या कुछ और है, फिर भी डेडिकेशन है या नहीं, वो सब मैटर करता है. मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. जैसे क्या हाँ इट्स वेरी गुड वे, ठीक है, बहुत सही है. जैसे कि बच्चा होता है राइट, ठीक है, बच्चा जो है चलना नहीं आता उसको राइट, तो यू हैव टू वॉक इट थ्रू थे वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है आपको, है ना. सेम चीजें मतलब कंपनीज में भी होता है बहुत बार. मतलब आई डोंट नो, मुझे मैं तो एम्प्लॉय की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, है ना. एम्प्लॉय वाला पर्सपेक्टिव बता रहा हूं आपको. एज अ फाउंडर वाला अलग हो सकता है कि भाई ये काम ही नहीं कर रहे तो निकालो ऐसे. नो इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली ना ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि आप एक को निकाल दोगे दूसरे लाना बहुत मुश्किल है आजकल. हां ये भी पॉइंट है. अच्छे एम्प्लॉय अगर निकल जाएंगे, अच्छे एम्प्लॉयज हम छोड़ भी नहीं सकते. अगर वो अच्छे हैं तो हम क्यों छोड़े. We are ready to grow with them. Ready to train also. There was some people we were ready to train for 1 month, 2 months, 3 months. Sometimes they won't pick up also. उनको freedom. Not interested. We are okay with giving them that freedom of you manage. You want to manage. पर हो सकता है ऐसा कि मिशन स्टेटमेंट मैच ना होता हो बहुत बार कि मतलब आपका मिशन. That's the reason why you keep changing. You keep looking for someone, but there will be a one time you want to get one guy. One single. There are some big EdTech companies are there, no? You hardly see the one big founder with around 3 to 4 people will be there. They are the main guy. So that main guy to get the other 2 guys, it took 2, 3, 4 years, 2 to 3 years to get. There are so many people left, so many people came, so many people left, so many people came, and that 2, 3 guys going to one guy is going to come like become right hand, and he will become like one of the 4 pillars of the companies like that. So that process will take some time for any startup. It will take 2 years, 3 years to get that one proper team. हम हो या ना हो. Some people are very lucky; they'll get it initially only. Correct. Very lucky. They get Start-up team से कर रहे हो 4-5. For example, I'm very lucky. I got started immediately. Being founders or startups, this is another biggest challenge of finding employees जो हमारे साथ मिलके काम करें, हमारे लिए करें, उनके लिए करें. अरे क्या देखता है मतलब एज एन जो आपको जॉब दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर आप कह सकते हो, ठीक है, और एक एम्प्लॉय में आप क्या क्या चीजें देखते हो कि भाई ये चीजें इसमें होंगी तो यार
will manage or will select? फर्स्ट थिंग उसको खुद को इंटरेस्ट होनी चाहिए कि हाँ, मुझे करना है ये जॉब, ठीक है, और मुझे ग्रो करना है इसमें, आगे जाके मुझे एक पोजीशन में रहना है, करियर इन दिस फील्ड, करियर उनको इंटरेस्ट है तो करियर बनाएंगे, तो उनको खुद को एक पोजीशन में देखना पसंद करेंगे, ठीक है आज मैं यहाँ पे हूँ, एक साल के बाद मुझे इस पोजीशन में रहनी चाहिए, तो वो इंटरेस्ट अगर है उनके अंदर सीखने का, तो आई गेस some people want to, like, for example, some people say I'm just free for 6 months, I want to work in 6 months, after 6 months I have some other plan I want to go. ऐसे बहुत लोग आए भी हमें, then in that case what we can do, actually correct, they should be like, teacher means I want to become teacher, I want to grow in this field, that kind of people we need it actually, but very difficult to find the teachers who want to so much passionate about that in any field, for that sake they want to grow in that particular field. कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ भी नॉलेज भी नहीं होता है, but they are ready to do hard work, ऐसे लोगों को भी हम हायर कर सकते हैं, बट जो लोग जो हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहते, सीखना भी नहीं, नो दे डोंट वांट टू लर्न, फिर भी सैलरी चाहिए, तो ऐसा नहीं तो थोड़ी ना चलती। करेक्ट। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि यू गाइस आर इन कॉलेज, ठीक है, और कॉलेज में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हो यार ये बंदा तो यार बहुत कुछ बड़ा करेगा, सपोज ऐसा होता है, ठीक है, भाई ये बंदा तो बहुत कुछ कर सकता है, तो अब ऐसा हो सकता है आपको दुश्मन हो, भाई उससे लड़ाई हो रही है, इससे बात नहीं करता, लेकिन यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ऐसा एक वाइब आता है, ठीक है, तो क्या क्या आपको लगता है, क्या क्वालिटीज, आपके रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, एक वो इमेजिनरी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या क्या होनी चाहिए वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके खुद के कॉलेज में या फिर खुद की लाइफ में ऐसे कौन कौन से आपको लोग मिले हैं जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हो कि भाई हाँ ये बंदा तो कुछ कर जाएगा, आई वोंट नेम ऑल्सो, और आपको पर्टिकुलर कोई दिमाग में है कि ये बंदा बहुत कुछ करेगा, उसने करा भी है, मतलब ऐसा कुछ खुद के बारे में तो चलो सोचते हैं लोग कि मैं तो करूँगी बहुत कुछ, अपार्ट फ्रॉम यू गाइस कौन कौन आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं कि मतलब यार एक्चुअली वो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, नाम बताएं? हाँ बता, ओके ठीक है, इनको भी मैं बताती रहती हूँ, उसका नाम आनंद है, ठीक है, ठीक है, जब वो कॉलेज में था इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, इज अनदर सेक्शन, है अनदर सेक्शन, फिर भी वी जस्ट यूज्ड टू से हाय बाय, सो जब भी वो मिलता था वो अच्छे से बात करता था, एंड जब वो कॉलेज में था तभी ट्यूशंस लेता था, बट ही वाज नॉट दैट यू नो, वो खुद पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, इट्स नॉट लाइक ही इज वेरी मच 90% 95 प्लस, अच्छा ओके, बट वो ऑलरेडी ट्यूशन करता था, जब भी मैं उसे मिलती मुझे लगता कि ओके ठीक है कुछ करेगा, क्योंकि वो ज्यादा बातें करता था, बड़े बातें करता था, बट आज मैं देख रही हूँ उसे करते हुए, आज वो डायरेक्टर बना है और मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, कन्नड़ा में उसका 2 मूवीज आई है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आई डिडंट रियली फील, बिकॉज उसका फ्रेंड सर्कल जो था, जो उसके फ्रेंड्स में देख रही थी, मुझे लगता था कि इतना बातें करता है, शायद करेगा शायद नहीं करेगा, बट आज सच में उसने किया है। क्या क्वालिटीज दिखी आपको उसमें, ऐसी क्या क्वालिटीज उसको दिखती थी आपको कि बात करने में तेज है, और कुछ क्वालिटीज थी उसको? ही वाज वेरी प्रैक्टिकल, ओके, वेरी प्रैक्टिकल, जिंदगी में क्या चलता है क्या नहीं चलेगा, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके, पढ़ाई कर रहा है बट खुद इतना मार्क्स नहीं ले रहा है, बट ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, आई मीन ही इज टेकिंग ट्यूशंस, सो ही इज इनटू अर्निंग, सो ही इज वेरी क्लियर कि उसको क्या करना है आगे जाके, उसको कुछ तो करना है बड़ा, बट जो वो इंटरेस्टेड है उसमें कुछ करके दिखाना है, मुझे ऐसा लगता था, बट आई डिडंट नो वो डायरेक्टर बन गया, या ऐसा। In my school, I think my friends, some of my friends actually, there was one friend, I think my friend, there's a guy called Ranjit, you met Ranjit also. Yeah. He is extremely determined actually. He started his own company, he was there in the CTO for 3 years. And even he scopes 30 under 30. That guy, yeah. Okay. I think he will do extremely good, I feel. Even other friends also. There's one more guy, I think I used to see one day, Ashok, I mean, in my 12th. Okay. That guy is right now in Google in the main head office. Okay. So that guy is so determined. Even this Ranjit and Ashok and all those. Hey, tell about this guy who did UPSC exams. I have one more, I have my IIT friend. I have so many friends there, in different levels. His story is actually nice. Okay, that guy is also, this Ashok also, they are very determined. Qualities they had is that he should study for 2 hours only, but extreme concentration. But 2 hours, 3 hours, he like enjoy it. But still he cracked IIT with some all India rank something 120 something like that. Okay. It was very difficult. Even this Ranjit also is my class topper, and they were started CTO, CTO of some companies, some IIT Madras again. And they are also determined. They will take one subject, they will finish it,
and like so much well organized everything. That's a well organized, determined. I'll see. Okay. And one more, my friend from IIT. He is he's an IPS officer actually. He is into commissioner for the Andaman Nicobar Islands. Okay. So police. Okay. And that guy also is very determined. But see, he was when he came to IIT, he came to the mind that I will become IPS only. I'll just study this much. So I want to get this much grades. 88 points CGPA, 9 CGPA. Already IIT कर रहा है. तो वहाँ तो आपको. IIT में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. No, you will have some students which are extreme opposite also. I'll tell the story. Okay. So there is and this guy is very determined. Said I will do this much for this 2 years. I mean this much of CGPA I want. I don't want extreme 9.5. They target exactly like this much, but I focus this much on this time. And will crack it exactly at 2 months. Exactly they crack after 2 years. Exactly what they think they will do it. I mean, exact plan. Constant determination. The plan is there, no? That is extremely good. Well organized and 100% concentration in doing that particular work. And then you just have to plan exactly. This I'll do it, and you execute that every day for the 2 years. Now, of course, he is now IPS officer. You will be there where I mean, it's a different level. I mean, I've seen a lot of people like that. Even so many people are there, my friend. एक और मूवी अभी डायरेक्ट कर रहा है, तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि कभी-कभी बन जाते हैं. Actually, she's also very much interested in the movies. She has acted also in one movie. हाँ. Yeah. अच्छा. अरे यार, अभी वो बहुत small. I mean, short film. Not short film, it's a big movie. Actual movie. Full movie. But very small role. अच्छा. Just ऐसे ही. Actually, there are a lot of audition in the में movies. गई थी There are a lot of और. shortcuts where she don't like the shortcuts. Where she would try to go in actual way, but it's very difficult for people who go in the right way. आपको पता है इंडस्ट्री कैसी है. हाँ तो. That right way you can't go in industry, very difficult. Shortcuts वर्क नहीं करते हैं सब. हाँ ये तो बात सही है. You can take shortcuts, but you have to sacrifice a lot of things for that. हाँ ये तो बात सही है. मतलब बहुत कुछ होता है. मतलब जो मूवी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा. इनको जब मैं मिली ना, मैं आपको बोल रही थी कि. अच्छा प्रैक्टिस बना था. अरे. मैंने बहुत ऑडिशन भी दिया था और ये जो मूवी मैंने किया था वो ऑडिशन से ही. जब मैंने जस्ट जाके बात किया वो डायरेक्टर ने, वो एक्चुअली इज अ वेरी गुड डायरेक्टर. मैंने अब कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि आपको पता है ना इंडस्ट्री के बारे में. मैं एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स बनाने का ट्राई कर रहा हूं. आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, बट मैंने बोला ना जो मैं मेरे मास्टर्स के बाद मैं जो इनके ऑफिस में बात करने आई थी, उसी दिन मैं ऑडिशन दे के आई थी वहाँ पे. अच्छा. The same day I gave audition and the same day I came and met that guy and he hired me up. And उसके बाद 3 months के बाद I joined him. लाइफ पूरी चेंज हो गई ना. मेरा लाइफ एक्चुअली मेरा जो गोल था, yeah, that's what there is a lot of changes. ऐसे में कोई से मैं एक क्वेश्चन याद आया इसी चीज को लेकर. ठीक है, बचपन में ना मान लो कि मुझे जो है एस्ट्रोनॉट बनना था, राइट. मुझे स्पेस में जाना था, नासा वासा इधर उधर. मैं सोचता था कि मैं एलियन वेलियन को सर्च करूंगा पूरा, इस तरह से मेरा गोल था. और मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी भी. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसलिए घुसा था कि मैं स्पेस में जाऊंगा, ये करूँ, इसरो में जाऊंगा वगैरह. ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी चीजें हुई तो नहीं जा सकते, बहुत सारे रीजंस थे. ठीक है, तो रह गए. समझो बचपन का एक गोल था जो मैंने सोचा कर लोगे, ट्राई भी किया लेकिन नहीं हो पाया. तुम फिर अलग कुछ और ही कर रहे हो तो उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, राइट. समझो चेंज हो गए, राइट. सेम वे में, ठीक है, सेम कॉन्टेक्स्ट में, राइट. सेम आप दोनों के लिए भी कि बचपन में जो गोल्स थे, जो सोचा था वो मतलब कि वो हुआ नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रही, क्या फील्स रही, क्या प्रॉब्लम्स रही, ये क्वेश्चन अगर मुझे पूछोगे तो या सो दैट्स बीन इन माय लाइफ. क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ. आई मीन लाइक व्हेन आई वाज मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो थी तब से मैं स्टेज शोज दे के आ रही हूँ. मेरे स्कूल में मैं बहुत फेमस थी पूरे स्कूल में एंकरिंग के लिए. अब कोई भी प्रोग्राम हो पहला स्पीच मेरा होता था ऐसा. तो ऐसा कर करके मुझे वो एक इमेज था कि एक्टर बनना है, कुछ करना है इस फील्ड में, एक्टिंग करना है ऐसा करके. बट देन रियलिटी हिट्स वेरी हार्ड, राइट. सो सिर्फ एक्टिंग से लाइफ नहीं बनता. आप चांस मिलेगा नहीं मिलेगा किसको पता. तो ऐसा हो करके मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया. वैसे लाइफ ऐसे ऐसे घूम घूम के इनसे मीट कर लिया. रिग्रेट तो नहीं करते ना? नहीं एक्चुअली जो हम सोचते हैं ना कि ये बनना था, मिलना रिग्रेट करते हो कि नहीं? नहीं मिलना रिग्रेट नहीं करती. बट जो मैंने कोशिश करना था वो मैंने नहीं किया ठीक तरीके से, वो मैं रिग्रेट करती हूँ. एंड आज मैं सोचती हूँ शायद मैं और थोड़ा ट्राई करती
पर एक्ट्रेस बनने की कोई एज नहीं है, राइट? खुद की स्टूडियो खोल लो, खुद का ही मूवीज बनाना स्टार्ट कर दो, हो सकता है। वही बोलते रहते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा पैसा आएंगे मैं खुद प्रोड्यूस कर लूंगा करके, बट वो वाला जो अभी शादी हो गया, रिस्पांसिबिलिटीज है, ये भी है। अभी पूछते रहेंगे कब बच्चे होगा। एक्टिंग वाला कीड़ा कहीं ना कहीं से निकल जाता है, कुछ ना कुछ होता है, बहुत सही। आप एक्टिंग ट्राई करते रहो, हो जाएगा। पता नहीं, अभी ऑलरेडी एक फील्ड में हूँ, तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, तो आई एम हैप्पी, बट स्टिल वो थोड़ा कहीं रिग्रेटनेस होती है, करना चाहिए था। ठीक है, आपकी क्या रिग्रेट्स हैं बताइए? I am living a life of no regrets actually. Because I had बचपन से टीचर बनना चाहता था। No, seriously. He wanted to be a teacher from, I guess, from 5th standard or 8th standard. My school, Navodaya school. Go and ask my Navodaya school. Everyone knows me as a teacher only. When I went to engineering, people used to call me Mestre. In Kannada, we call Mestre. Teacher. I used to teach all diploma students in mathematics. In IIT, I went teaching. So from 8th, I began. No, actually, there was a situation why I became teacher actually. So I used to read books a lot. When I take a book, right? And a concept, if I take it, right, I'll take the concept and read a lot. If not understand, I read one more book. I read one more book. At least 2 to 3 books. I still understand concept so well. My friends used to come and ask me. They'll read only one book and ask me. They don't understand this. I used to explain them very well. One day, what happened in my class 8? No, there was a concept in electronic configuration we call. No student understood actually. Teacher explained. And I say, you understood. I told I understood. So you come and explain on the board. I explain on the board everything. And everyone understood. I took practical example. There was a chalk piece there. There was a box there. I took the box. I can say this is like a shell. These are electrons which can fill in that. So teacher only could not tell that. She was just explaining with board. So I used the practical thing which was there. And I explained everything. Everyone understood after that. And it's like no one understood and everyone understood. मेरे जिंदगी में मैंने किसी को देखा है कि मैंने ये सोच लिया और मैंने ये कर दिया है, then he is a person. My dream is not that big. No, he wanted to become this and he has become. No, teacher is anyone can become. You don't need big dreams for that. See, if you want something dreaming. Dream is dream. वो छोटे या बड़ा हुआ कि नहीं हुआ बस. स्टार्ट तो वहीं से होता है, कोई भी चीज हो. अब आप टीचर बनने के बाद इंस्टीट्यूट खोलना, इंस्टीट्यूट के बाद कंपनी बनाना. That is all secondary. But teacher, I want to become. So that time it was struck, and from I think I don't have any regrets any time in my life. तो ऐसा तो होगा ना, जैसे मान लो in other things. In future, नहीं in future. No, I have regret that the things were not people who come. अगर टीचर ना होते तो क्या होता है? I love gardening. I love agriculture. गार्डनर होते आप? Oh, definitely I will become gardener or agriculture. No, I think I am born by engineer. I like my engineering. किसी कंपनी पे जॉब करते होते हैं. Of course, but ultimately I would have taken some land somewhere. I would have become, I would have happily. अच्छा, ओके, मतलब farming and all थोड़ा उसमें अच्छा. I mean, not gardening and. समझ गया. थोड़ा मतलब आप उसमें घुस जाते हैं. Agriculture and all, agriculture का business चल रहा होता. Some business, something I would have entered agriculture. Because he likes. I like to play with the soil, plants. I like to grow. I like to see how they're growing, what nutrients they want, how they're behaving. ये प्लांट्स ना है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब प्लांट्स के बारे में जानना इंटरेस्ट. अभी इनको सिखा रहे हो हम धीरे धीरे. I'm teaching. इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, I because मुझे भी अभी इंटरेस्ट आ रहा है. But the regret is that we could not grow like in the how fast. We have grown more faster. But I think we're taking it because of the. I think somewhere we have failed in the marketing a little bit, and we're taking it a slower phase. But I think we have decided now. We will enter into exactly the marketing. From now. As a founder and co-founder, right? Same. Founder, partner. We both are co-founders. फिर भी मतलब जो स्टार्ट करता है फाउंडर होता है, जो उसके साथ बाद में होता है को-फाउंडर होता है. बेसिक हुआ. ओके. तरीका है ये तो बोलना. और पार्टनर हो आप दोनों साथ होते हैं. ठीक है. कितनी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कितनी चीजें आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज की? ऑब्वियसली बात ऐसे तो नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं भाई, मैं तो हमारा परफेक्ट लाइफ है. 100% huge compromise will be there. There'll be huge fights will be there. And there's so many times where we are going for a trip and we're talking about more about institute, more about the classes, and we're not completing the portions, but we're still talking about that. And when we go out also, we have to take sometimes our phones, make sure that students, if someone issue comes, something happens, some messages comes, we have to talk. And even directly also, she keep telling every time, other people are talking so much, and we sit and we talk. Directly we'll go off to the topic of. जैसे मैंने बताया कहीं डिनर पे जाते हैं, मान लो फूड ऑर्डर किया हमने, हम जस्ट खा लेते हैं. उसके बाद विल बी लाइक, अरे यार इतना जल्दी हो गया, हम बाहर है, कुछ बात भी नहीं किए. देन वी विल कीप थिंकिंग slowly and doing सब slowly इतना अच्छे बात करके खाते रहते हैं, and विल बी लाइक हमने खत्म. There is no story for her to tell. If she's working in different office, she'll tell so many stories. My office like that, my friends like this one. I'll tell so many stories. Nothing is there. We know everything. And there's one thing where we'll be always be this one, and decisions when it comes.
it's tough to take many time decisions actually, because she's not just some employee something. I will take this one like that. No, we have to think. I'll say definitely she'll say no. वो भी चीज tough So है. this is very tough actually. It's very 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 tough. That when you have a partners and managing a business and take same decisions, because definitely we two people have two different opinions. I will have different opinions. We have two different opinions, but our She'll have goal is different same. calculation. कंपनी का अच्छा करने का ही, ग्रोथ करने का ही We एक have ही to goal grow है. both, but she want to grow in different way. I want to grow in different way. I feel this is going to be best. Even that's going to be best. So this is one उस thing. पॉइंट पे बैठ के बात करते हैं. कई बार ऐसा नहीं कि जस्ट बात के झगड़ा भी हुआ है. Yeah, that's very उसके common. बाद भी फिर से एक अंडरस्टैंडिंग में आके okay, sometimes what he says I'll agree to that, sometimes what I say is agree to this. ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ता है. ऐसे compromise करके. You have to compromise actually a lot, and taking decisions is very difficult when two people are running. I mean, that to your husband and wife and you're running. If you're co-founding, that's okay somewhere. पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ एक ही रहता है. पर्सनल लाइफ अफेक्ट करता है प्रोफेशनल लाइफ को. प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, then again that will affect personal life. Suppose we fought something on some personal thing, it will affect our professional thing. We have recording now. Immediately, we fought just now 9 o'clock, but then we have a recording. At 10 I have to take a class. So that will get. ऐसा बहुत बार होता है. बहुत बार. And we just fought and we just take class immediately next. When student we go, see, you should never do. You have 100 problems. You should never show that. You should be always there. That's a golden rule of a teacher. Any problem you have, when you come to class, you have to smile and you have to teach. You have to bring the best out of you. But it's very difficult to do that many times. Sometimes keep running, but see, there are compromises at the same time. We have advantages as well, like where हम जो भी हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. It's not like I'm working for someone where I don't have any rights to take any kind of decisions. Here we have that freedom, and we know how much can we grow, we cannot, what we can do, what decisions we can take exactly, how much we can plan financially, what we can do next. Yeah, so I guess being founders or startups is another advantage, that you have your own holidays. It's not like you have to ask for holidays, leaves. Saturday we don't go out. But at the same time you have to control yourself. कितना enjoy करना है, कितना काम करना है. सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है. Biggest disadvantage is that you need to have pressure. So usually people have pressure, no? We will not have pressure. You should take our self pressure. अपने आप को खुद responsibility putting लेके yourself करना under pressure पड़ता है. when there is no pressure, no? That is the biggest task. हाँ, मतलब मैं सोच सकता हूँ लेकिन मुझे उठना ही पड़ेगा. I can do. अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ये टारगेट है कंप्लीट करना ही पड़ेगा. बट हमें यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, हमारा खुद का कंपनी No है. one is forcing me. You take 10 hours lectures. करना पड़ेगा. No one is telling me actually. Actually, when exams comes, whole day we don't have even time to eat also. We go in the morning. एग्जाम टाइम्स हम ठीक से सोते भी नहीं है. We don't sleep. इतना वीडियोस रहता 3 है. hours, 4 hours we sleep. ओवरनाइट रिकॉर्डिंग्स चलती है हमारी. Full lights and that whole night in the single room. 10 to 15 lights, tube lights. So much. कंटीन्यूअस रिकॉर्डिंग्स चलती रहती है. उसके बाद थोड़ा कंट्रोल होता है. No, this is the biggest thing. So in startup, what happens if you're co-founder, there is no one to push you, but you have to push yourself to do something. See, being That a is- partner, that is another advantage. She will push where me. I will push. She will tell something. She will tell me what is this you are and sitting most of the in times, class. obviously, it will be from our side. Sometimes that, I will no, tell her, we'll do you this, have we'll do class. that. स्लॉपी कौन है ज़्यादा, मतलब लेजी कौन है ज़्यादा? Yeah, they will not let other person because they know what to do it. So they will at least tell, do this. You have to finish this. अभी आप दोनों में से लेजी कौन है? I maybe I'm little lazy more. Not exactly. Not exactly. आप दोनों मतलब Somewhat. Sometimes I push her, sometimes she'll push me. But initial days of the companies, if we see, I was guess- lazy. अच्छा. When I was in comfort zone. I have 40 students. I'm getting it. What I want more. So a person, if you earn 20-25 lakhs annually, it's fine. See, अभी हम एक स्टेज पे हैं जहाँ पे okay we can chill out a bit. I mean like not chill out. I mean थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा लेजी रह सकते हैं. But ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप ऐसा नहीं रह सकते हो. बहुत पुश करना पड़ता है, कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा We work a lot. We have, like that. see, in a month, if you suppose everyone in a month going to work only every day, we're going to work 6 hours. Correct. Imagine I have 3 to 4 months where we will work 12 hours. Like We have that. huge Full burden of because hard exams work. going to come. If exams gets over in April month, students will be a little relaxed. And the new So admits we'll going to also- come, they will take more time to come and they'll also take pressure. No? So it's like somewhere on 2 to 3 months we get a time where we can little relax. Not like means we have to update content, take live classes, everything online process. But still somewhat we will not have pressure. But November, December starts, we'll have a huge pressure. We feel like sometimes what is this horrible life? Such a horrible life.
employees are better. Sometimes we feel that pressure of being that you say not founders or whatever. We feel that pressure. Okay. Sometimes we feel like अरे यार अगर कोई कंपनी में काम करते सुबह से हम काम करो उसके बाद I mean if you are out of company you're done. You're done and you have your separate personal life. But here we don't have that life. You know you have your separate personal life, professional life. हर टाइम चलता रहता है. Any time you keep thinking. आज हमने ये कर दिया. अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो आप घर में आज शाम को आप बिजनेस के बारे में बात करते रहते हो. ओके कल हम ये करेंगे. इमेजिन फेस्टिवल आ गया तो विल बी थिंकिंग कि स्टूडेंट्स को ऑफर देंगे कोर्सेज पे ऐसा. सो एनी टाइम दैट कीप्स रनिंग इन माइंड. बहुत सारे ना वो होते हैं जैसे कि क्या कहते हैं लेवल है ना, जैसे कि मान लो एसोसिएट लेवल मैं वो बोलता हूँ. ठीक है एसोसिएट, फिर उसका सीनियर, फिर टीएल मैनेजर, फिर उसके बाद आपकी कंपनी के मान लो डायरेक्टर आ गया, उसके बाद मैं सीनियर मैनेजर्स, फिर वेब वीपी, एवीपी, डायरेक्टर्स, फिर आता है आपका फाउंडर्स. को फाउंडर्स आते हैं, डायरेक्टर्स के बाद को फाउंडर्स आते हैं. राइट, आप उस लेवल पे बैठे हो और नीचे वाले पूरे इस पे है तो है ना भाई, है तो वही ना. Correct, actually, yeah. But what I'm telling you is actually, frankly, I'll tell you, anyone can become founder, co-founder. The problem is to get that, that amount of work and that amount of students. I mean, my case students, something else. To get that much amount of thing, it take a lot of time. So we have. It's just like our name got changed to co-founder 3 years back, but now we are feeling that. Yeah, of course. Now we are feeling that it is a good amount of things that is coming into this. But ultimately, I think वो होगा मतलब indirectly वो तो होना ही है ना. मतलब ये तो एक basic company को. As I told, anybody can become founders or co-founders. जो भी ideas है, startup है. But actually में जब वो pressure आता है, क्या आप ready हो लेने के लिए? जब situations आती है, challenges आती है, you have to see falls and you have to see ups also. Together manage करना पड़ेगा आपको. वो अगर आप प्रेशर लेने के लिए रेडी हो एनी बिजनेस. बहुत सारे लोग ना पैसा कमाने के लिए आते हैं. ठीक है, आपका जो मतलब इंस्टीट्यूट, आपका जो कंपनी है राइट, वो बहुत डिफरेंट उसमें आ जाता है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है. राइट, मोर लाइक यू शुड नॉट बी मोर लाइक सर्विस बेस्ड है. राइट, सर्विस बेस्ड है जिसमें आपके गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं. राइट, मैं अगर कोई कंपनी मान लो मैं इंटीरियर गार्डन की कंपनी कोई भी कंपनी खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे गोल्स अलग होंगे. क्लाइंट्स लेकर के आने हैं लाखों रुपए, उसके धीरे धीरे बढ़ाना है, अपना बीज बढ़ाना है, क्वालिटी देनी है, समझ उस वे में. ठीक है, लेकिन अब एडटेक की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, वो बहुत पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है. आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा. राइट, कि स्टूडेंट्स को हो सकता है बहुत सारे फ्री में भी आपसे पढ़ाते होंगे, बहुत सारे लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे. राइट, तो आपके अकॉर्डिंग अभी आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? मतलब अभी क्या करना है? मतलब होता है एंड गोल करना है मुझे, तो एंड गोल क्या है आपका एज अ मतलब उस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे? सो एजुकेशन एट affordability would be our first priority. We are giving it very affordable actually. People are very happy and extremely good. And our main thing is that for Karnataka, we are not thinking anything outside Karnataka. In Karnataka, we are going to start. We already plans are going on. Basically, तो आपको फीस कम करना है. Fees, this is very important. That's the first priority. Always. ठीक है. हर एक बच्चे को affordable. Affordable education. I believe in especially in education sector, there are only few people who are very money hungry. They want to take a lot of business to themselves. I mean, if they sell 100 rupees thing, they simply it's not even worth 100 rupees. It's worth of 25 rupees. They're simply making is 100 rupees and 75 rupees they're taking to themselves. There's one guy who is becoming crorepati. I mean, making 200, 300, 500 crores is happening in Karnataka. Unnecessary charge कर रहे हैं. Why we are charging? इतना charge करने के बाद भी आप quality education नहीं दे पा रहे हो. Reduce it. People are selling village. कम में दे सकते हैं, कम में ही quality education दे सकते हैं. तो वो हम लाना चाहते हैं. There are a lot of things are there. We can do that. We can definitely reduce the price of all the courses which are offline right now. Already all India people are doing online हर जगह पे already आ गया है. All India level doing it. Offline में भी आना बहुत जरूरी है. ऑफलाइन में आ गया है, ऑनलाइन में आना जरूरी. ऑनलाइन में आ गया है, ऑफलाइन में लाना बहुत जरूरी है. अभी ऑफलाइन में 3.5-4 lakhs is not at all worth it for 1 year course. एक साल के लिए 2 lakhs is not worth it. उनके पीएफ अमाउंट लोन लेके ऐसा बढ़ा रहे हैं. तो अच्छा इंस्टीट्यूट या फिर अच्छा कंपनी बनाने के लिए 4-5 चीजें जो बहुत जरूरी है. मतलब ये कुछ लास्ट क्वेश्चंस में से है कि मतलब एक अच्छी कंपनी अगर मान लीजिए आपको बनानी है, ठीक है, या फिर एक अच्छा इंस्टीट्यूट ही बनाना है, ठीक है, क्या 4-5 चीजें होनी चाहिए जो मस्ट है? First and foremost thing is the technical knowledge in that field. That particular field, whatever company or whatever you're working at, you should be really expertise in that particular field.
There is, suppose what happens in teaching in institute. Suppose if we have depended on some physics faculty, and if the physics faculty, suddenly leaves or some mind shift happens, there should be someone immediately take over. Or as a co-founder, whatever this may be, you should be in a position to handle that immediately. You should not let your students suffer, or maybe something to happen. I mean, you should not do all the works, but you should know all the works. Okay, got it. You should not do all the works, but you should know all the works. Now it's not like we are like founders, but we are also teachers in our own company. Sometimes we all pick the calls. हमें पता है कि अगर कोई नहीं है तो हम ये handle कर सकते हैं. So if you are running something that you should be knowing, you should be good at it, is what we always have. We have learned everything now, from taking admissions to calls to the managing the app and the technicality of that, and students how to manage, and the teaching, editing, and the content and the creation, and then teaching. Entire process, what is required for institute, we know everything. Of course, we can't do all the works, correct, but we know everything. If something goes wrong, we can catch that, and we can put someone, or we can train someone, or a short span of time we can put some time of ourselves there. So this much you should have as a co-founder of any company, as an institute owner of anything. This is one of the most important things you should have it. Then afterwards, obviously, in education sector I'm talking about, I think it should not go too much into money making mind. You always have to think, because one thing, once the parents know what is the most important, what is the major thing they're going to spend? One is the education of a child. Right. Most of the salary the Indian people, whatever we earn, right, most of things is going to school fees and college. If this is reduced, they can really save a lot of money. They can put it in other things. They can put a health insurance. They can put properly health. They can take care. Correct. Whole thing of a parent is going into the education only. You ask any if a family of two have two children, the 50%, 60% of salary goes to school education. ये बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब अगर पेरेंट जो है ना एजुकेशन में डाल रहे पैसे, फिर आप बोलते हो ना कि इसको स्विमिंग में भी डाल दो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाओ, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि उसमें डाल पाए. Really, education, majority is education. The majority expense of your salary is education only. Once you get married and have kids, majority of your salary that is stuck for. I mean, from first standards to they become graduates. इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है. No, but don't worry. By the time you get married, and then I think the whole education already revolution has started. We need a big revolution in education sector where the schools. I mean, I personally feel this much is not required to pay. Not required. The second thing is that we have to make sure that all the parents bring the affordability, and parents' burden we should reduce it. That's one more thing. And then what else we need to have? Okay, and a successful company founder, and of course you should have. We have learned the skills slowly. That managing and all these things we have come up very slowly. But you need to have the skills like managing skills, financial management, people management, financial management. It's not about teaching. You will feel if you're extremely good teacher also, you'll feel extremely bad. And taking certain decisions at certain point of time. I'll give a lot credit for her for that, आप दोनों एक दूसरे complete कर रहे हो indirectly, right? Yeah. Teaching में अच्छे हो, management में अच्छे हो. That's the this is one thing that we are very happy. क्योंकि आप कोई business में हो, आपको grow करना है. There will be certain points where you have to take certain decisions. उस time पे जो decisions आप लेते हो, it has a huge impact in a future perspective. तो वो बहुत important होती है आपको future perspective think करके उस time को manage करना. वैसे होता है पार्टनर जब चूज करते हो ना, मतलब कंपनी की अगर बात करेंगे तो कैसा होता है कि यार मैं कंपनी बना रहा हूँ, मेरा आइडिया है, मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अपने साथ देता हूँ तो मेरा फायदा, एक चीज आती है मेरा फायदा तो नहीं उठाएगा, ये नहीं करेगा. तो अगर आप दोनों एक दूसरे के लकी, ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसा पार्टनर मिला जो आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ रहने वाला है, राइट? बट बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बंदे का बहुत अच्छा आइडिया है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, बट एक गलत partner या गलत team member. That's the biggest mistake. If you make a wrong co-founder, it'll going to ruin you. I mean, instead of why you take co-founder, so that your responsibility splits into half, and you can focus individually. Instead of that becomes one more headache for you. Burden हो गया. Yeah, one more thing. And people, I think initial stages, I don't think so. Is like you have to start your idea and start taking people first under you, and definitely you'll get one guy who is like extremely good, and you make him as a co-founder. Slowly, it's need not to be. I think you must have heard about now. Like I think recently some companies people have joined later, but
even they're given a co-founder status. Correct. हाँ ये तो मैंने सुना. That is recently they joined after maybe company started 5 years back, and they started very recently. But he got a co-founder status because he was as important contribution as a co-founder for the company. So maybe you start initially and directly, and if you have a good friend already, like luckily I have like that, if you have someone who is already very well about mind, you can directly take co-founder and start it actually. But maybe sometimes बहुत बार उनको कोई funding के वजह से co-founder लेना पड़ता है. You should not hire a co-founder. That is where पैसों की वजह से नहीं करना चाहिए. पैसों की वजह से लेना पड़ता है. But I guess most of the times लेना चाहिए. It's better you start from scratch. Okay. Okay, so आप कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करो, जो भी है आपके पास उसमें ही थोड़ा स्टार्ट करो, उसके बाद विल सी either you will get an idea or you may meet some person like that. But आप पहले ही ले लोगे तो you will have that pressure. So pressure आ जाएगा तो आप it's like you want to do something or maybe you will be pressurized to do something else or that idea might completely change. No, initially only. So ऐसा होने का chances होती है तो start by yourself with whatever you have. Initially only if you have already like-minded person who are thinking both of you do same thing, you can start it. But for the sake of that, you don't बहुत सारे founders ऐसे ही हैं, like I have seen like husband and wife. Husband wife and those two friends will charge. Yeah, because they are like-minded. Infosys started by 7 like-minded people. Like that. Correct. But ऐसा मिलना it's like very rare. बहुत मुश्किल है. और ऐसा मिल जाता है तो फिर तो companies build करना बहुत आसान हो जाता है. Yeah, that's true. Great. That is only biggest headache. Co-founder, employees and all. ठीक है. तो इतने भारी क्वेश्चंस के बाद थोड़ा एक हल्का सा क्वेश्चन पूछना, ज्यादा मुश्किल नहीं है. हल्का सा क्वेश्चन, उसके बाद विल एंड द कन्वर्सेशन. ठीक है. बहुत देर हो गया, मैं कॉफी की जरूरत पड़ेगी. Definitely will have a good coffee. जैसे कि एक छोटा सा, जैसे कि ऑब्वियस बात है, हर इंसान राइट अपने आप को एडवाइस करता है, राइट, सेम वे में, सेम कॉन्टेक्स्ट में, राइट. आप अपने आप को 5 साल पुराने वाले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, राइट, 5 साल पुराने वाले को जो उषा जी हैं, राजेंद्र जी हैं, राइट, क्या एडवाइस करोगे? अपने आप को एडवाइस क्या करोगे? Me. I have to be little 5 years back, no? Me. 5 years back, you. Yeah. So I made mistakes in few being aggressive. I didn't be like fast, and I mean, already when you're good at something, you should be more fast at that, and being aggressive and finish it faster, so that once you make a market, once you're the front runner, right, then it will be easy for you to do it. Okay. There are few things where I wanted to start, but that couldn't. I mean, we'll do it later. Correct, but I was little, came back in that. I wish if I had started that time, I think it would have been more further. I mean, I made mistakes in not being, aggressive at what we're doing it. Yeah. I mean, more faster at those places. I was like, decision making थोड़ा उस समय सही नहीं था आपका, ऐसे बोल रहा हूँ. नवी. Decision making. Yeah, decision making means, see, when you get 5 lakhs funds, what to do it? You have to be very aggressive, 20, 40, 50. Okay. This was like, I was 5 years before me, I was like, no, fine, okay, normal, let it go, no issue, it's going well, comfort zone. There's one, you are struggling and you come to a comfort zone. So don't want to leave comfort zone. I was in the comfort zone for this one. तो अभी change हुआ है? वो अभी definitely. Yeah. No, it's changing. But I think from last 1 year it's going to change more. That's changed a lot. Yeah, definitely, it's because of her. No, first of all, 2 years back we married, and she came to my life before 2 years. Right. So that 5 years before was completely. Once she came, it has progressed a lot, and now I think it will be more. Now there's a huge. In fact, she has already given a key to me now. Right. Full completely. Now I have to run more fast in coming this one. No, seriously, I'm talking about. See, I always make sure that we have certain pressure, so that we keep working. आप अपने आप क्या एडवाइस करोगे? 5 साल पुराने वाली जो उषा जी हैं, अपने आप क्या एडवाइस करोगे? Maybe not like regret or something, but then personal life or professional life, so थोड़ा decision स्लो मैं फील करती हूँ कि मैं थोड़ा डिसीजन स्लो करके लेती या थोड़ा और टाइम लेती. बहुत फास्ट ले लिया कुछ डिसीजन. Only decision she taken fast is marrying me. Every decision in her life she takes lot of time. She thinks actually, every time. I'm a person very slow decision हर एक डिसीजन में बहुत टाइम लेती हूँ, सोचती हूँ
क्या करना है, is this good or not, or it's not like I'm regretting, I'm very happy marrying him, that's another phase. But then there are a lot of things where you know you take some decisions like this. मैं अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, और I always suggest please always don't make decisions when you're confused. जब भी आप confusion में होते हो, don't take decisions. Wait, situation आएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है. आप कंफ्यूजन स्टेट पे हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो या बहुत एंग्री हो, जब उस टाइम पे जब आप डिसीजन लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हिट्स यू वेरी हार्ड. सो डोंट एवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड. सो व्हिच आई एम लर्निंग नाउ, एंड मैंने बहुत सीखा है शादी के पहले या शादी के बाद, जो मैं थी या अब मैं जो हूँ. सो I'm at a good position. What I was, I've learned a lot of things. And इसके बाद भी मैं, I want to see myself at a very good position, being good, a good wife, a good co-founder, maybe a good actor. शॉर्ट फिल्म में आप बना तो कोई शॉर्ट फिल्म ना, तो आपको जरूर कास्ट करेंगे वहाँ. मेन कैरेक्टर वाली वाइब ले लेना बिल्कुल. Thank you. Actually, the director which I worked with, he was the one who pushed me, like, आप बहुत अच्छे करते हो, करो. So that was the spark. So which I'm just keeping it inside. So देखते हैं. ठीक है. मतलब सीख गए हो, हिंदी भी सीख गए हो आप, इंग्लिश तो आती है, कन्नड़ा भी आती है. I learned all the languages. Tamil. She was Tamil also very well. Very fluency. तमिल भी आती है आपको? कितनी लैंग्वेज आती है? Tamil, Hindi, obviously English, Kannada and Telugu. 5 languages. 5 languages. And I love learning Malayalam. I'm trying. कोई अभी friend नहीं मिला है, but his apartment में है. अच्छा. She will learn Malayalam very soon. French, Spanish, ऐसा कोई languages सीख रहा हूँ धीरे-धीरे. होता है ना बहुत सारे लोग कि मुझे French भी सीखनी है. मुझे ऐसा कोई interest नहीं है. I'm more interested into languages which I see around. अच्छा, okay. आसपास languages. ठीक है. All right. इसके बाद मुझे क्या एडवाइस करोगे as a किसी भी सेंस में, कि पर्सनल लेवल पर जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन रहा है, ठीक है, किसी भी सेंस में, कभी हमने पहले बात किया था, we met you first time in the Avalanche, वहाँ पे ऊटी में मिले थे. Avalanche ऊटी में we met you, right? No, I really good thing about you is that I mean very friendly and very expressive. The way you talk, seriously I'm telling you, usually I'm not a person like you. Like I mean different. I really like that your character of that nature of your very next, you know how to talk to people, and you know you connect too well with the student, with the people. Actually, that's a very good thing. First time हमारा जो conversation था वो भी बहुत अच्छा गया था. Yeah, that's really good. Actually, we hardly met for 5 minutes, 10 minutes. Yeah. When I met him, he was not this talkative. The one more thing. So like that. But आपके बारे में अभी मैं बताऊँ तो यार, you're a complete an extrovert, I can say. Not थोड़ा you're, because अगर if you're not an extrovert, you can't make friends. Correct. आप जाके I guess वहाँ पे भी आपने पहले बात किया था हमारे साथ, तो आप you're good at this, and आप इसी में आपका life ढूंढ रहे हो, which is very good at. So you're good at this skill, and you're improving that, and I guess you're gonna make out of it. So आप इंटरव्यू पे अच्छे कर रहे हो. आप सजेशंस पूछा, मैं बोल रही हूँ. जो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बेंगलुरु में जो आपको लगता है कि ये बेस्ट एक प्लेस भी, कर्नाटक में आप हो तो सबसे पहले आपको रागी मुद्दे ट्राई करना है. रागी मुद्दे. Ragi mudde. If you're non-vegetarian, you can try with. If you're a non-vegetarian, you can try with something nati koli saru. This is authentic Karnataka food. But other than that, obviously, is this one. Other than we have a lot of bisibelabath. You also tried bisibelabath, puliogre. All this. Dosas, obviously. आप तो जानते ही हो. Karnataka also different place. Mysore is famous for something. Mysore Pak. And their way of doing non-veg items are different. Like that. And if you go to Dharwad, it's different. And if you go to Bangalore, it's different. Benne dosa. Bangalore, if you try fish. Benne butter. You not tried butter dosa. Dharwad benne dosa. Open dosa I've tried. No, there is separate. There are separate only benne dosa fans to try that. Davangere benne dosa. Davangere benne dosa. Davangere benne dosa. It's called Davangere is a place. Davangere is a place. It's a benne dosa. It's famous for benne dosa, like that. ये किसका नाम है? Davangere benne dosa. Bangalore, you should try Mangalorean style. I don't know names of that. Bangalore is fish curries. If you like non-vegetarian.
Bangalore do the really good food. Bangalore people. Famous for fish curries. That. ठीक है, अब लास्ट हम एंड करते हैं हमारा कॉन्वर्सेशन आपके कन्नड़ से ही एंड कन्नड़ा से एंड करते हैं, ठीक है? कन्नड़ा. It's really nice talking to you. अभी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. इसको कन्नड़ में कैसे बोलेंगे? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. धीरे धीरे बताओ यार. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ धीरे धीरे एक एक वर्ड. ನಿಮ್ಮ 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 ಜೊತೆ 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 ಮಾತನಾಡಿ ಜೊತೆ 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 JOTH ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡ ಮಾತಾಡಿ ಗಲತ್ ಮತ್ ಬಿಲ್ವಾ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ 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 ಆಯ್ತು हिंदी में भी होता है ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ठीक है एक सेकंड लास्ट में बोला ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. So every time if you interview someone from Kannada person, at the end you say this, they'll be very happy. ऐसा ही है. Make sure you note down this. ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ means people. Yes. NIMMA. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ऐसा संतोषवाइतु. एक बार ये मेरे को खुशी वाला सही लग रहा था, थोड़ा आसान है. संतोष is Kannada word. ये खुशी वाला तो सही है ना. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಖುಷಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. संतोषवाइतु, खुशी आयतु. धन्यवाद आपका, मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा. हिंदी में बोलते हैं थैंक यू. Thank you for taking our interviews. This is our first interview देने के लिए आपका. चलिए, I hope it went well. Yeah. It went well. Coffee बना दो. First coffee ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yeah.